हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय राहुल भाटिया एंड वनन छिपर टू प्रीव्यू गेम वीक 35 इन फैंटेसी प्रीमियर लीग। पहले मैं सोच रहा था कि मेरा क्यों इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पॉड में, भाटिया साहब और मनन ही बात कर सकते हैं बिकॉज यू टू एब्सोल्युटली नेल्ड योर फ्री हिट गाइस। वेल डन भाटिया साहब, द कमबैक इज ऑन। मनन, मतलब रियलिस्टिकली आपका टॉप 1 के फिनिश का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड एज ऑलवेज मुझे लगता है कि आई एम जस्ट हेयर टू कंडक्ट एंड फिल अप द नंबर्स। वील गेट टू योर टीम्स। पहले अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लुक एट द टॉप 10, बट मनन आई थिंक आपकी रैंक से ज्यादा आई वांट टू फोकस ऑन सुजन, हु इज लाइक नंबर 1 राइट नाउ, सुजन भट्टा, बिकॉज बहुत टाइम से हमने देखा है कि बर्न ब्लास्टर्स और इनविंसिबल का डोमिनेशन था, बट ही सडनली लीपफ्रॉग्ड एवरीवन एंड ही इज इन लाइक फर्स्ट पोजीशन 2407 पॉइंट्स। मनन, यू आर 21 के विद 2349, ये आपसे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स आ गया। इमेजिन करो इनकी I रैंक क्या होगी। think he must be He's something top like 5K. Top top 5K easy. 1K, Top top 2K. 1K, top 1K or Probably something. will be triple digits man, maybe. Yeah, Well done. insane, We should insane. we should invite him on the pod for one episode. Yeah, we'll try to. We will try to do Yeah, something. easily मेरी जगह आ सकता है, absolutely. Let's let's start with the I teams. I agree. I agree. Yeah. लेट्स स्टार्ट विद द टीम्स। और अगर एक नॉन फ्री हिट प्लेयर की बात करो, जैसे मैं था, मेरे को जो हर्ट किया वो डिफेंस ने किया, राइट? एंड Yeah. इनसेन स्कोर्स फ्रॉम योर डिफेंडर्स। Yeah. वरन ट्रिपियर, राइट नूरी एंड सेसेनियन combined almost give you like 40 points man. Yeah, Crazy. and I think those were the three defenders. पता है इस फ्री हिट पे एक चीज ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी, although it was quite template, but काफी अटैकिंग डिफेंडर्स थे जो जिनकी क्लीन शीट चांसेस भी बहुत अच्छी थी, जो हमने पूरे सीजन नहीं देखा है अभी तक, राइट? वी वर सर्च बहुत सारे डिफेंडर्स को हम ढूंढते रहे हैं पूरे सीजन में, बट दिस वाज दैट वीक जहाँ पे दे वर प्लेइंग प्रमोटेड साइड्स, क्लीन शीट के चांसेस अच्छे थे, अटैकिंग थोड़ा सा फॉर्म तीनों टीम्स ने पिकअप कर लिया था। तो I really am really happy with 97 points, taking me from 40K to 21K, तो almost half my rank. Luis Diaz, another someone जिसपे I was quite confident on. मैंने लास्ट मिनट स्विच किया था बिटवीन बार्न्स एंड जेकब मर्फी, तो दैट रिजल्टेड इन 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. So I think रक्षित हम बात कर रहे थे, and I told you यार I just feel कि बार्न्स might not start, but at the end they both started. Salah Yeah, so again. if you saw the highlights, there was a Yeah. very legit penalty call जो बार्न्स का असिस्ट होता, जो नहीं दी थी हैंडबॉल के लिए, और जेकब मर्फी डाइव was given as a penalty. That is the Yeah. margins. Carter. It's all Carter, man. Jacob Murphy is my single favorite player in FPL this season by far. इससे ज्यादा किसी ने मेरे को हर्ट नहीं किया पूरे सीजन, और bastard he is. Salah with 16 captaincy points. Love it. लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में मुझे सादा पॉइंट्स देंगे, but Do you it really was love it because मतलब 5 गोल मारे और सिर्फ 1 गोल and no assist is slightly disappointing यार. Come on. नहीं यार, again because If you I told had me to Liverpool score 5 goals, नहीं, not your team, for me also, for everyone. I expect अगर आप 5 गोल लिवरपूल को दे रहे हो, I'd probably expect like at least 1 goal, 1 assist from Salah, probably like double digit score at least. that's Because I fair. saw a lot of people who went for like Trippier captain, Cunha captain, तो उनको काफी gains हुआ यार इससे. True, but we were never going Trippier or Cunha, yaar, being very honest. हाँ, Because but Cunha, risk takers were rewarded basically. but yeah, that's true. But the options that we were considering was Salah, Isak. उसके अलावा आई थिंक हम कंसिडर भी नहीं कर रहे थे, तो कंसिडरिंग दैट तो साला ने आउटस्कोर किया ही है. कुनिया को खुद का because डाउट we are था, safe template managers, that's why. बट कुनिया का वो भी था ना रक्षित की, ओके आई गेट ट्रिपियर पॉइंट, बट कुनिया के साथ था कि वेदर ही विल स्टार्ट और नॉट. ऑब्वियसली ही स्टार्टेड एंड प्लेड रियली वेल, 15 पॉइंट्स, रियली हैप्पी विद स्ट्रेंड लार्सन. अगर आप पीपल वेंट फॉर राहुल हिमेनेज एंड होसे सा, उस कॉम्बिनेशन ने ज्यादा पॉइंट्स दिए, but I was quite high on Sten Larsen, so I'm just happy he returned. Overall, really good week. Clivert a little disappointing, Yeah, congratulations for your Clivert clean sheet point. You got that at least. Thank you so much, sir. Thank you. भाटिया साहब 94 points, only 3 points behind Manan, but थोड़ा सा आपका flavor change है. He is exactly basically talking about the combination you went for, which is Jimenez and Jose Sa penalty से 12 point. But you went for double Newcastle midfield, so Barnes और Murphy आपके पास थे. So I think I was unlucky you must with be that. Yeah, pretty thrilled with unlucky your with the free hit overall, I Newcastle. guess. Yeah, I'm happy with the week, but I expected more from Barnes and Murphy, considering I think Newcastle scored 3 goals.
with literally 1 assist between them. That was also, like you said, a dodgy penalty assist. So disappointed there, but I think my Wolves guys have given me the green arrow. Almost 40 points between the 3 Wolves guys. Yeah, man. And I actually had Sanchez and Semedo, and I switched it last 10 minutes. So that's resulted in another 3-4 points. So very happy with that. I am very disappointed. I was considering Soboslai random punt, but didn't think that he would start or his minutes were not nailed. If only I had gone, that would have been more fun. But 94 can't complain. I think almost more than 100k green arrow, which will fall now with Mbuemo sells and the Wood owners. But I'll take it. Needed a huge week and keeps me on track to hopefully avoid my worst rank of the season. भाटी साहब टॉप 100 के nailed finish है, आपको पता है, मेरे को Yeah, पता है, I agree. every one of the viewers 100k is like 50 points ahead of me. I'm not covering 50 points at 4. easily हो जाएगा. You- But you great do comeback it. भाटी साहब. Yeah. Especially because आपके जो आगे managers हैं, people like me are underperforming severely. But my take is कि I was always going to get a red arrow. मेरे को obviously आना ही था इस week. Also अगर मैंने थोड़ा सा अपना जो बचा भी लिया है वो हिट लेने के बाद हुआ है, because I got in Cunha, I got in Luis Diaz, and I got Bowen in has saved your blushes. Bowen has saved. Burn has Ah. saved you a lot. Like Bowen, Burn, right? So Bowen I has got been a really- great pick for you. But Bowen pick, I think, is ये हफ्ते goal मिलना है जब सब he is बचा लिया. almost matching Trippier बचा लिया है. with yeah. first goal of the season, by the way. First goal of the season. Yeah. So you Yeah, have but no if reason we- to complain about Jacob Murphy. On the flip side, एंटनी रॉबिन्सन पूरे सीजन हर मैच स्टार्ट करके 90 मिनट खेला and randomly decided free hit week में कि मैं I Buda- won't even be in the squad, right? Fulham did And keep a अगर clean आप sheet free- anyway. तो अगर एक आप point का free फर्क. It wouldn't have mattered, no? मतलब हाँ. फिर भी यार मतलब एज एन अटैकिंग फुल बैक जो आप लोग का सेसेनियन था, ही गॉट इनटू गुड पोजीशंस एंड क्या पता आप रॉबिन्सन स्टार्ट करता तो क्या होता, राइट? मतलब इट्स वेरी इरिटेटिंग. Yeah. बट बुर्जिस कम्स इन फॉर 1 पॉइंट. उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बुर्जिस से. सो हैप्पी ये 1 पॉइंट तो आ रहा है. लिवरपूल अगेन, कोनाटे obviously अगर मैं फ्री हिट करता probably would not have gone for a Liverpool defender because I don't trust them. They were better options, but I still expected कि यार कुछ against this rotated team रख लेगी, but header खा लिया. Bowen did well with 2 assists, Salah captain, Luis Diaz goal. Again, my objective was कि मैं थोड़ा match करूँ. Cunha with the 15, Isak with the 6. Again, I got hurt because of the defense you guys had. Sessegnon, Ait Toure, these 2 players especially, इन्होंने मेरे को hurt किया. अगर आप देखोगे मेरी टीम में आपकी टीम में क्या फर्क है, with 2 players left, अगर आप देखोगे मेरे पास Mbuemo और अभी कीपर है, एक्चुअली मेरे को hurt किया Sessegnon और Ait Toure ने, जो almost I thought you would get in Ait Nouri instead of Barnes. That's what I think you mentioned also on the pod, and I was surprised you went for 3 attackers. यार एक एक्चुअली defender लगाना चाहिए. I had 3 डिफेंडर्स, तो मुझे लगा कि थोड़ा अपसाइड होगा अगर मैं अटैक करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से Yeah. बर्न, रॉबिन्सन, कोनाटे वर फाइन. सो इट वाज बिटवीन राहुल हिमेनेज, इवन निल्सन. यार हार्वी बार्न्स, जेकब मर्फी में से एक लाने था मुझे न्यूकासल के लिए. इट डिड नॉट वर्क आउट, बट Yeah. I thought कि 4 at the back, do I want to go after taking a -8? उसके ऊपर मेरे को डाउट. एंड यू नो राइट, this week defenders did well, but पूरे सीजन का narrative is कि defenders have Exactly. underwhelmed. Yeah. So I was like, I think your game week rank is very good. Your red arrow is because you took a -8. So -8 71 है. actually. हाँ, score अच्छा है 70. या एंड कंसिडरिंग कि मैंने -8 लिया है, कंसिडरिंग मेरे 2 प्लेयर्स बचे अभी, Mbuemo and Sells, Easily you're getting what 10-15 more points. 5-6 easy. पॉइंट और मिल जाए तो मतलब Yeah. ओके, आई एम फाइन. You're touching 85 easily. Yeah, easily touching 85. I'll be happy to touch 75 to be honest. But मेरा ऑब्जेक्टिव था कि in this sort of a week जहाँ सब फ्री हिट कर रहे हैं and I'm on a -8, it was a conscious decision because it will help me थोड़ा longer term आगे. I was like कि I'll accept like a 20k red arrow, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मतलब इतना तो expected ही after taking at least a -8, क्योंकि even if I match free hit teams I'll be -8 points behind, and as it turns out free hit scores have been crazy. So to be honest, अगर मैं 80 hit कर जाता हूँ somehow from the last match, I'll be fine. मतलब I'll be totally okay with it. But हाँ, all focus is on wildcard and bench boost in the weeks ahead. बट गारंटी नहीं है मनन कि मैं करूंगा, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा. वी हैव नॉट गॉट अ डबल गेम वीक अनाउंसमेंट एंड इट इज अनलाइकली. बेन क्रेलिन, प्लैनेट एफपीएल, जेम्स, ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि इट इज अनलाइकली बिकॉज एस्टन विला का जीतना जरूरी था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस फॉर अ डबल टू हैपन फॉर दैट मैच. एंड एज इट टर्न्स आउट अब ऐसा लग रहा है कि मनन द फिक्सचर्स माइट स्टे इन 37. ऑल्दो यू हैव टू मेंशन कि
टॉटनहम ने रिक्वेस्ट डाली है ऑफिशियली प्रीमियर लीग को कि उनका जो गेम वीक 37 मैच है वो प्रीपोन कर दे, ताकि वो पोटेंशियल यूरोपा लीग फाइनल से पहले उन्हें ब्रेक मिल जाए. But Aston Villa have also written to the Premier League saying कि they don't want it to happen. So Yeah, there is like a yeah. tug of war going on. और जो FA Cup final होगा which will be on the weekend of 37, उसके जो मैचेस हैं most likely may stay in 37 itself. तो most likely हो सकता है कि It Wednesday या will be Thursday. transferred to the midweek, of 37. Yeah. And so definitely 100% एक चीज तो आपको ये करनी चाहिए wait, because अगर double होता है या नहीं होता है, Don't make a transfer, we should get an Yeah. announcement. But Manan, is it safe to say कि let's say हमें announcement अगर नहीं मिलता है, is it safe to say कि doubles नहीं होंगे before the I deadline? don't think so, because then वो जो criteria होता है where you have to notify the fans, right? एक certain amount of time से पहले you have to notify the fans so that they can make their travel arrangements and everything. तो वो criteria मैट नहीं होगा. So I'm assuming कि अगर 35 deadline से पहले अगर नहीं आता है तो there won't be any doubles. I don't think so there'll be any doubles, which makes our lives easier. Obviously, क्योंकि डबल गेम वीक में क्या होता है ना, आप सक हो जाते हो, डबल जिनका फिक्सचर्स डबल होते हैं उनको लाते हो, एंड देन दे ब्लैंक इन द नेक्स्ट गेम वीक, एंड देन यू हैव टू प्लान फॉर इट, टेक हिट्स. सो इट्स बेटर, एंड बिकॉज इतनी सारी टीम अभी ऑन द बीट जो हम बोलते हैं, जैसे आर्सेनल हो गई, देयर फोकस इज प्राइमरीली ऑन चैंपियंस लीग. लिवरपूल ने टाइटल जीत लिया है, सिटी का थोड़ा FA कप पे है. अगेन बहुत सारी टीम्स है जिनका कुछ तीनों रेलीगेट हो चुकी है, टीम्स लेस्टर, इप्सविच और साउथहैम्पटन. सो आई जस्ट फील कि इट्स एक, सो नाउ द स्ट्रेटजी डेफिनेटली शुड बी जो टीम्स के पास कुछ है खेलने को, राइट? जैसे जो हम टॉप 5 फिनिश की बात कर रहे हैं, टीम्स लाइक विला, टीम्स लाइक आउटसाइड चांस फॉर ब्रेंटफोर्ड, राइट? ये सारी टीम्स को मैं सॉर्ट ऑफ सिटी टारगेट करने का देख रहा हूँ. And that's where I think even Rakshit on a 35 wildcard, हम आपका wildcard draft देखेंगे, but those sort of the picks I'm assuming आपने sort of target किया होगा थोड़ा. Yeah, definitely. मैं आपसे बात कर रहा था कि I'll find it easier from a wildcard perspective अगर double नहीं हो, to be honest. I know bench boost है, but double game week में bench boost कैसे backfire करता है आप लोगों ने देख ही लिया है. And it becomes even more tricky because एक तो you're forced into getting double players, एंड ऑल्सो आप सब ऑप्टिमल प्लेयर्स अपनी बेंच पे लेते हो जो मोस्टली एक मैच स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम अ बेंच बूस्ट परस्पेक्टिव एंड अ वाइल्ड कार्ड परस्पेक्टिव, आई डोंट वांट डबल्स हो. इट मेक्स माय प्लानिंग इजियर, टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो मैं तो चाहता हूँ नहीं हो, बट अगर होते भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा. भाटिया साहब, लेकिन लुकिंग एट द फिक्सचर्स, what teams do you think people should target? People not on wild card, 4 weeks left, तो आप थोड़ा अब narrow horizon से view कर सकते हो season को. So if you had to talk about, let's say 5, 6, 7 teams, keeping in mind कि उनका motivation क्या है, keeping in mind उनके fixtures क्या है, who are the teams and players जो आपको लगता है लोगों को target करने चाहिए? I think मैं 3 टीम तो definitely highlight करूंगा जो people should be looking to get in assets from. First is Brentford. Fixtures आप देखिए, United home, United rotated United, even a full straight United is a good fixture this season, but a rotated United is even better. And उसके बाद Ipswich, Fulham, who are already on the beach, it looks like it, and Wolves. I mean, there are all targetable fixtures जिसमें आपको goals मिल सकते हैं. Second team I would say is Aston Villa. They're fighting for their lives for Champions League qualification for next season. And despite कि 5th place को भी Premier League से next season Championship में entry है, so Villa have a chance. Fulham again, great fixture. Bournemouth away. Bournemouth are completely off form. We've seen that in the last few weeks. They play Spurs, who have the Europa League semi-final to look forward to, and United again. Similar case, Spurs and United are not focusing on the league. So I think Villa is even better than Brentford. And third team I would say is not necessarily team, but आप midfield में Bowen consider कर सकते हो for West Ham. Again, Spurs, United, Ipswich, 3 out of the 4 games, and Forest also not as strong defensively away from home. So these teams definitely. इसके अलावा I think Newcastle still are good. I wouldn't let the fixtures put you off because Brighton away I see goals. Chelsea at home is a good fixture. Arsenal away again rotated for the Champions League and nothing to play for in the league. And last game, home game against Everton is not bad at all. So these are the teams I would say. Teams to avoid I would be like Fulham, Bournemouth, nothing to play for. जो teams आप सोचो mid-table पे है, they have no incentive of Europe, not fighting for a top 4, not fighting to save relegation. Basically teams on the beach.
उनको avoid कीजिए because motivation down. I'd just like to add one more team, Forest. मुझे ऐसा लगता है obviously the fixtures are really good in my opinion. Especially from an attacking point of view, Leicester at home, West Ham away, Chelsea. ऐसा हो सकता है वो last home match होगा जहाँ पे Chelsea might also need to go for a win to secure top 5, right? And that's where Chelsea at home, it can be a great fixture for someone like a Gibbs White, Elanga or a Wood. So I just feel कि Forest players भी might be crucial here. या इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर मैं देख रहा था अपनी टीम की कौन कौन सी टीम्स उन्हें टारगेट करनी चाहिए, तो इट बिकेम स्लाइटली कंफ्यूजिंग बिकॉज सम टीम्स हैव ओके फिक्सचर्स बट उनका नथिंग टू प्ले फॉर है, अदर टीम्स हैव गुड फिक्सचर, अदर टीम्स हैव अ लॉट टू प्ले फॉर बट फिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल चेल्सी हो गई, दे हैव अ लॉट टू प्ले फॉर बट लुक एट द फिक्सचर्स, राइट? लिवरपूल एट होम, न्यूकासल अवे, यूनाइटेड इज अ ओके मैच स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद फॉरेस्ट अवे, राइट? 3 ऑफ द फिक्सचर्स आर लाइक प्रीटी बैड. उसके अलावा आर्सेनल देख लो फॉर एग्जांपल, राइट? मतलब दे हैव नथिंग टू प्ले फॉर एंड दे हैव टेरिबल फिक्सचर्स, बट सिटी स्टिल इंटरेस्ट मी. एक तो सिटी का ये है कि देयर इज अ मोटिवेशन टू डू वेल बिकॉज अभी भी उनका टॉप 5 सिक्योर नहीं हुआ है. दे आर डूइंग वेल, दे आर ऑन ट्रैक, दे आर आल्सो इन द एफए कप फाइनल, बट पेप ने हमें दिखाया कि ही इज नॉट अफ्रेड टू प्ले किड्स इन द एफए कप, राइट? इन अ क्रूशियल सेमीफाइनल ही प्लेड रिको लुइस आउट ऑफ द ब्लू, राइट? सेकंड मिनट में उसने गोल स्कोर कर दिया. निको राइली खेल रहे हैं, जेम्स मैकेटी आजकल खेल रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन से अटैकर्स. फिल फोडेन तो इज कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर. केविन डे ब्रुयने डिड नॉट स्टार्ट दैट मैच, गुंडोगान डिड नॉट प्ले. तो थोड़ा सा ट्रिकी ये है सिटी के लिए कि कौन से प्लेयर्स करेंगे नहीं करेंगे. प्लस वी हैव न्यूज़ कमिंग इन कि अर्लिंग हालैंड माइट बी बैक, राइट? ही इज इन back in training. Yeah. Rodri is back, so this will further complicate the picture. How will Haaland coming back impact Marmoush? ये आपको देखना पड़ेगा, right? विला मुझे पसंद है एंड आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी हमें इसलिए मिल गई है बिकॉज रैशफोर्ड इज नाउ आउट फॉर द सीजन, सो वॉटकिंस बिकम्स लाइक अ नेल्ड ऑप्शन. ही बिकम्स एब्सोल्युटली नेल्ड. They have a lot to play for. They had a very disappointing week, but I still feel they are good because I like all the 4 fixtures. मेरे को फुलम पसंद है, बोर्नमथ पसंद है, टॉटनहम पसंद है और यूनाइटेड पसंद है. मुझे लगता है they are going to score probably couple of goals in at least 3 of those matches. Also they are battling for top 5, right? So again, yeah, outside shot है. थोड़ा मुश्किल होने वाला है, but they will go for it. They will go for it, yeah. They will go for it. West Ham again. I agree with भाटिया साहब. टीम नहीं बोलूंगा, बस बोवन बोलूंगा. बोवन और बस्ट because that otherwise the entire team is crap. फुलम पे मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा. फुलम और ब्रेंटफोर्ड अभी भी मुझे ब्राइटन, फुलम, ब्रेंटफोर्ड तीनों 8th प्लेस के लिए compete कर रही है, which might be a conference league place. Yeah. I think if City win the FA Cup, it might be a conference league place. अगर पैलेस जीतती है तो it might not. That's what I think heard. So वो 8th प्लेस के लिए अभी 3 टीम्स हैं, तो मुझे लगता है फुलम और इन ओके फॉर्म. दिस वीक इज अ टफ फिक्सचर, बट देन उनका फिर एवर्टन और ब्रेंटफोर्ड ओके है. सो सेसेनियन टाइप का प्लेयर जो सॉर्ट ऑफ लाइक अ गिफ्ट है, आई एम कंसिडरिंग फॉर माय वाइल्ड कार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट तो मतलब आयरॉनिकली अगर आप देखोगे लेस्टर, इप्सविच एटसेट्रा, दे हैव लाइक डिसेंट फिक्सचर्स बट दे आर लाइक एब्सोल्युटली क्रैप. बट एवर्टन, ब्रेंटफोर्ड, वुल्व्स, ऑल दीज टीम्स आर आल्सो, मुझे लगता है हाउ टू ट्रीट टीम्स लाइक पैलेस नाउ who have like okay fixtures, but I don't know कि उनका कितना फोकस लीग कुछ भी लेना देना नहीं है लीग से. But they'll be on a high. They'll be on a high because they are already in the final. But क्या rotation होगा, क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा. So, काफी tricky है. But I agree with you guys on the whole कि सबसे important is to see कि which are the teams with something to play for. I just hope कि double ना हो, because जो भी हमने भी बात करी है that goes into trash if double होता है. And let's say Tottenham का double होता है, I know we would still get Tottenham players, but again double होता है तो you have to go for the upside वाला thing because they have 2 fixtures and फिर वो सारी चीजें motivation वगैरह won't come into play. जैसा हमने 33 में देखा था, lot of players only started 1 game. I think वो scenario हमें काफी देखने को मिलेगा if double होता है 36 में. अगर लेट्स से विला टॉटनहम डबल है तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ मेरा कैप्टन ऑली वॉटकिंस होगा, लाइक नेल्ड ऑन. Might go for Rodgers. Yeah. Spurs at home, Bournemouth. John McGinn captain. John McGinn captain. Yeah. Okay. Rakshit, you forgot to mention Asensio. Double captain. And I know what will happen. He will score now in the double. Yeah. He'll score 2 penalties now. Tell me now, Rashford के absence में he's still the number 2 penalty taker now, right?
ओके, तो आई हैव नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस वाइल्ड कार्ड टू बी ऑनेस्ट. मैंने बस 10-15 मिनट में बेसिक बनाया था. दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय फाइनल वाइल्ड कार्ड. दिस जस्ट अ ड्राफ्ट, बट दिस सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट्स की द डायरेक्शन इन विच आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या लाऊंगा. सो गॉन फॉर आई थिंक बहुत स्टैंड आउट डिफेंसिव फिक्सचर्स किसी भी टीम के नहीं है. सो माइट एज वेल गो फॉर डबल अप ऑन अ टीम जो historically they have been good defensively, plus they have I think 2 really good fixtures. I think Ipswich and Leicester probably at home. Last 2 home matches at Goodison Park. I know Tarkovsky नहीं है, but it doesn't matter because fundamentally Everton are a good defensive team. तो मुझे लगता है 2 fixtures में अगर मैं डबल क्लीन शीट ला सकूँ, that is something जो मुझे लग रहा है okay हो सकता है. फिर सिटी के fixtures are okay, तो Guardiol I think could be a decent option. I would still like some Forest in my team because मुझे लगता है कि I can see them squeaking out a couple of 1-0 wins अगर उनको क्वालिफाई करना है चैंपियंस लीग के लिए. मिलिंकोविच का थोड़ा पोटेंशियल भी रहता है. आई डोंट माइंड सेल्स आल्सो बिकॉज सेल्स हैज सर्व्ड मी वेल. मिडफील्ड में अ फ्यू पिक्स आर सॉर्ट ऑफ मेरे लिए ऑब्वियस. एम्बुएमो मस्ट हैव है मेरे लिए. साला के साथ क्या करना है विल डिपेंड ऑन हालैंड का फिटनेस. अगर मुझे लगता है कि हालैंड बिकम्स एन ऑप्शन, ही मे बी बिकम्स अ प्लेयर जो एंड ऑफ द सीजन में कुड बी लाइक अ गुड डिफरेंशियल. मे बी पीपल विदाउट वाइल्ड कार्ड कैन नॉट रीच हिम, तो माइट ड्रॉप साला पे क्या टेक है आप लोगों का? मतलब लेट मी जस्ट स्टॉप इट देयर फ्रॉम समवन हु इज ऑन अ वाइल्ड कार्ड, जजिंग बाय द फैक्ट कि लिवरपूल लीग जीत चुकी है. मनन, do you think, what do you expect from Salah, right? Because fixtures are mixed, right? I think they have Chelsea, then they have what, Newcastle, Arsenal, yeah, and probably he may get benched in one of the 4 matches also. I won't be surprised अगर वो let's say 4 में से 3 करते हैं start. I don't think he will be benched though. यार इशू पता है क्या है रक्षित? Let's see, the thing you mentioned is it depends on Haaland, right? Because in that spot मुझे और कोई better player भी नहीं दिख रहा. It's not like all the premiums are falling off. Like आप पाल्मर देख लो, आप साका देख लो, आप साला देख लो, like they don't have any motivation to play. Foden है ही नहीं. Maybe De Bruyne is still someone that मेरे को थोड़ा सा interest करता है, but he has just scored in 1 match. That's it, right? पूरे season में obviously he has been struggling with injuries. So it's just उस spot में कोई नहीं है rather alternative. But let's say if Haaland is back and let's say Haaland becomes an option, then maybe I like the idea of switching Salah to someone other mid and then getting in Haaland, because Haaland he'll be hungry. I just feel he'll be hungry, and last 4 games the fixtures are really good कि वो आराम से 4-5 गोल मार सकता है, and that's where the upside lies if he's fit. Yeah. उसके बाद अगर चले तो आई हैव गॉन फॉर बोवेन. आई स्टिल फील कि द नेक्स्ट 2 फिक्सचर्स फॉर वेस्ट हैम अगेंस्ट 2 टीम्स जो यूरोपा लीग की कंटेंशन में, टॉटनहम एंड यूनाइटेड. आई नो वेस्ट हैम आर शिट, बट इवन टॉटनहम आर शिट एंड इवन यूनाइटेड आर शिट, एटलीस्ट इन द लीग. फिर आई हैव गॉन फॉर मॉर्गन रॉजर्स एज 4th mid, 5th mid. आई थिंक ही कंटिन्यूज टू स्टार्ट एवरी मैच, पोटेंशियल डबल, मोटिवेशन टू डू वेल, फिक्सचर्स आर गुड. फिर मैंने वुड, कुनिया, वॉटकिंस लिए हैं. आई थिंक द बिग डिसीजन ऑन द वाइल्ड कार्ड इज द स्ट्राइकर्स. स्ट्राइकर्स में आई थिंक देयर आर लाइक 5 गुड ऑप्शंस आई वुड से. तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे आई हैव टू मेक द राइट कॉल. कुनिया के बारे में श्योर नहीं हूँ अभी भी बिकॉज फिक्सचर्स वुड फुल्स के आर ओके मिक्स्ड, बट देर प्लेइंग रियली वेल. वुड के फिक्सचर्स आर गुड. आई थिंक इज अ गुड सेफ ऑप्शन, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने गोल्स मारेगी फॉरेस्ट इन द मैचेस. I think they'll probably target like 1-0, 2-0 wins. Watkins पे मैं ज़्यादा क्लैरिटी है मुझे, स्पेशली ऑन अ वाइल्ड कार्ड. रैशफोर्ड की न्यूज़ इज द बिग गेम चेंजर. सो अगर मैं वाइल्ड कार्ड कर रहा हूँ, एंड द वे वॉटकिंस प्लेड ऑल्सो राइट इन द लास्ट लीग मैच एटलीस्ट, तो आई थिंक वो काफ़ी इंकरेजिंग है. बेंच पे सेसेन्योन. आई नो फुलम के फिक्सचर्स आर मिक्स्ड, बट आई डोंट नो हाउ सीरियस रॉबिन्सन की इंजरी इज, बट सेसेन्योन इवन लेफ्ट बैक से आपने देखा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. I still have Daniel Munoz, to be honest. मैंने इतना सोचा नहीं अपने इस डिफेंडर स्लॉट पे, तो I'll have to see Jacob Murphy because I was struggling to find midfielders, to be honest. I have the budget, but I'm just happy you have him now. Ask you guys कि I'm just De Bruyne happy लूँ you या have Jacob him now. Murphy लूँ. I was like कि Jacob Murphy यार, क्योंकि मेरे पास कोई न्यूकासल भी नहीं है. होसे सा को मैंने लिया है, मैं सेकंड कीपर. But there is Alexander Isak, of course, who's one glaring miss in the wild card. He's not there. You have options like Johan Visa, who's arguably बहुत अच्छी फीलिंग है. मारमूश नहीं है पोटेंशियली बिकॉज हालैंड के आने से उनका रोल चेंज हो सकता है, पेनल्टीज जा सकती हैं एक्सेट्रा. दैट डज नॉट मीन इज अ बैड ऑप्शन. पता नहीं कब आएगा हालैंड, ये भी नहीं पता है. बट अगर आप ये 3 स्ट्राइकर्स देखेंगे, वुड, कुनिया एंड वॉटकिंस, यू विल स्टिल बी लाइक कि हाँ यार, दीज आर आल्सो गुड. सो आप दोनों से मेरा सवाल है, भाटिया साहब आपसे शुरू करूंगा कि
स्ट्राइकर्स से अगर मैं पूछूं, who are the three strikers do you think are the best for the run in? लेट्स से अगर आपको ब्लैंक स्लेट मिलता और बोला कि 4 मैचेस के लिए 3 स्ट्राइकर लेना, आप क्या लेते? I think Watkins, Visa, and I would still probably go Isak, just because Newcastle have the potential to score more goals, even though Isak ne as such recent form khas nahi bolunga for a player of his caliber. But Watkins, I'm pretty convinced he's I think the standout striker option for the last 4 weeks, especially because Rashford is injured, and Watkins mein wo hunger hai because he got dropped for Rashford for a couple of games. So when he's come off from the bench, he's looked really sharp. So Watkins, Visa, just because Brentford's fixtures and Brentford score quite a lot of goals. Cunha, Wood are not bad options, but again, you're taking a punt on Wolves' form to continue. But Cunha, again, he's playing for a move, and we all know the quality he has, so you can't go wrong with Cunha as well. I think ये 3-4 में से आप select कर सकते हो, but honestly, your team looks great, but striker options are the place where I think you have a lot of decisions to make. Manan, what about you? It's important to note कि ये तीनों penalty, not Watkins of course, but बाकी दोनों penalty takers भी है, right? Yeah, तो थोड़ा सा विस्सा के against आता है at least. Yeah, true, but I like the shout of Visa again. Whole season ही ऐसा नहीं होता. There are only a few players जो पूरे season they have consistently, he has done well for you as well, Rakshit. आपने काफी time तक उन्हें own किया. But I also still like अगर let's say Haaland pin if अगर Haaland pin use नहीं है, like कि he is fit to play, और अगर तो I'd still go Marmoush because the fixtures against City I still feel City is a team जो आपके पास अभी I can only see one, and I still feel let's say if a player like Marmoush, I know midfield में options नहीं है, but if a player like Marmoush or Haaland is available, I'd like to punt on them because वो जो 4 fixture City के I think वहाँ पे काफी upside है. I see City scoring a lot of goals in them, so that is one But place are जहाँ you- मुझे लगता है. जस्ट लाइक भाटिया साहब ने ईसाक का बोला, मैं तो और अंडरवेल्म हुआ मार्मूश से, मतलब नॉट ओनली बिकॉज पॉइंट्स नहीं है, बट ही इज नॉट लुकिंग दैट गुड आल्सो. He is not He looked impressed at very all. good. Yeah, he has not impressed. I agree. He looked very good, But initially when we he know came. the caliber of the player, right? कैलिबर again, तो कुनिया का भी है, fixture- कैलिबर वुड का भी है, विस्सा का भी है, ईसाक का भी है. No, true, And true. But दैट्स द इशू ना. what I mean is again जो चीजें हम देख रहे हैं, right? Motivation. I know form नहीं है, but the fixtures again, it's just obviously past points से reflect Wolves नहीं at होता home है. is not a standout fixture, yeah. It's not. But उसके बाद 3, he's on wild card. He is not planning for just 1 week, right? I think देखो they have मतलब standout fixture. Haaland yeah, is back. Southampton. Haaland is back and he'll definitely play towards the probably the last 2 matches or something, right? That's what I उसका said ना, aim होगा Marmoush का FA Haaland Cup पे final depend fit करता होने है. के लिए. Yeah. And he's in training, so कभी भी आ सकता है. So अगर आप वाइल्ड कार्ड कर रहे हो, you have to keep in mind कि चलो इस वीक let's say मार्मूश ने कर लिया, but Haaland is on the horizon, and मैं वही कह रहा हूँ. it may make Marmoush even better in terms of let's say थोड़ा और It actually space. does. When he plays second striker, he actually Yeah, looks Haaland better occupies the his line. defenders. Yeah. He comes Yeah, onto yeah. the ball, but penalties go away, right? That's Yeah, also a that's factor. I think sometimes we overestimate penalties. अगर आप अभी कुनिया की बात करो, I don't think Wolves have got a single penalty this season, or maybe Yeah, one. they have not. If I'm Yeah. wrong. But I agree कि हम penalty takers लेने चाहिए, but sometimes we add, I feel a little too much weight, and उसकी वजह से हम अपनी thinking restrict कर देते हैं. Yeah, why I like Cunha, Watkins पे I think we are in agreement he Yeah. becomes a really good option. Yeah. Why I like Cunha is कि he's a good goal scorer and a creator and a bonus Yeah, magnet. bonus monster. Look at the BPS from the He's an beginning. I know FPL darling, it's- man. He's everything to FPL में points होता है ना. Yeah, It and gets the tougher the fixture, and you see the last 4, they are not the easiest, right? They're okay. They're all okay, and it makes him even better because even an assist I know can get me like good bonus points. I just love Yeah. this player so much. Playing for a move, I know United's strong link है, but that gives him even more motivation to do well and catch an eye, right? But do you think he won't be benched, right? Again in the last 2-3 matches. I don't think so. Same. I don't think so. No, But because No, now he's away to back. Man City. 2 matches start करे हैं. The way he played he was absolutely sensational. Crowd से reception उसको okay मिला, decent मिला. I think he's going to do well against City also, to be honest. I think we know his caliber. That's the most important thing. We know his caliber. Wolves का caliber चाहे इतना ना हो overall, but they are flying right now, and he's playing really well. Wood पे I'm not sure. Probably I won't have Wood because again मैंने वही बोला था कि yeah, you don't like मेरे Wood. को नहीं लगता कि कितने गोल मारेगी फॉरेस्ट.
And I feel कि इलांगा might be a better option midfield, right? So for example, Murphy Rogers में से एक की जगह इलांगा आ सकता है. Problem ये है कि random matches में वो इलांगा को bench कर देता है. But do you, Random matches में 45 minutes पे सब हो जाता है. I don't understand what he's doing with इलांगा right now. but can you Rakshit target let's say a Pickford and a Sells rotation because Forest के भी I think एक अच्छा home match है and then Yeah. again you can play in one of the away Leicester. matches. Leicester Yeah. 36. So I Yeah. still would. I am still confident on at least on home. Forest, they are a good team, obviously. Yeah, absolutely. Agree with you. So something I'll like have a that. relook एक बार because मेरे को लगता है कि I was thinking of going double in defense, all in on Forest and Wolves, Everton, क्योंकि दोनों अगर आप देखोगे इस सीजन क्लीन शीट्स किस टीम की आई है तो it is Wolves, it is Everton, it is Forest जो defensive minded teams हैं. Look at the top teams like Liverpool, City, all these teams have not kept clean sheets to be honest. Arsenal भी मतलब if you spend a lot of money you can get probably one clean sheet in 3 matches or something. But अब Arsenal are not a factor anymore. So I am looking at a double. मुझे लगता है कि थोड़ा डेवलप करने से ही गेन्स आ सकते हैं. एक और ऑप्शन ये है कि I go for an Ait Nouri, right? Just fuck the fixtures and go for attacking upside. तो Ait Nouri खिला लो. But I don't see too many clean sheets in the last 4 for Wolves. Same. I know उनकी इतनी सारी आई हैं because the fixtures were really good, right? Bottom 6 teams के साथ मैचेस थे. उसके अलावा डिफेंस में हाँ I'll have a look कि क्या लेना है. बोवन पे क्या थॉट्स हैं? Do you think Bowen at least for the next 2 is okay? Next 3 maybe. I'm struggling I to think pick more any other midfielder. So yeah, He's okay for Any the options? till the end of season. Yeah. Any punts you guys recommend on the wild card? Because I could not find too many midfield options to be honest. Again, De Bruyne is one. Obviously, he's a proper punt, Rakshit. I know what you'll say Yeah. about him, but he is a proper punt. We remember. I what he honestly did. think De Bruyne is a better option than Marmoush at the moment. Yeah, I feel if I was wildcarding, I would have De Bruyne if But just for How much Problem with how De much Bruyne cash is- do you have left? I think I have 6 million or something. Yeah. Money is not an issue. I don't. You can Problem easily- ये है कि I can't even say कि he'll start. That's the problem. कि start करेगा वो match. I think You so. know, I think because so. He will. He'll FA Cup start 3 out of semi-final 4. में randomly He'll Three start out of 3 out of 4. I agree. I think Probably. he starts 3 out of 4. Probably, but can't say. अब मैं आपसे पूछूं अगर कि do you think he'll start the FA Cup final? Because Pep Cup में ना he has only talked about rewarding players who've done well for him in the cup. Like he talked about Nico Riley and all those. I'm pretty sure he will start Rico Lewis I in the think he'll final. start in the final. That's why I'm not sure if he'll start in the match before the FA Cup final. That's the only match because उसके अलावा I still feel he starts again क्या पता last Pep का? season. वही है क्या पता Pep का? Could Don't be know. he comes off from the bench in the final if they need a goal. So Yeah. that can also be. Yeah. अगर आपकी टीम्स की क्विकली बात करते हैं सो दिस इज आई सी आई हैव नॉट हिट द वाइल्ड कार्ड बटन बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अ पोटेंशियल डबल का न्यूज़ बिकॉज एक्चुअली माय टीम दिस वीक इज नॉट बैड तो अगर मुझे पता चलता है I कि have let's say told you so many times, just roll over your wild card, man. Use it in the next season. Have by the way I was looking at game week 38 wild card because standout fixtures है कुछ right Arsenal, I think Bournemouth, they are Arsenal, playing promoted Southampton. teams. Yeah so it's not a bad option but I have to If bring you- boost so If you don't plan to use Mujare the wild card, I'll still make another team. yeah I could do with one. Bhatia साहब but currently आपकी टीम है let me switch me and you Manan what are your plans this week क्या plan है Bruno out for Mbuemo is 99% happening. Saka for Bowen for a hit, maybe, or I play Murphy. So I have to consider that. But I think Bowen is worth a hit this week. आपको क्या लगता है? Yeah, I think so. I think rest of the team looks okay. The rest of the team looks really good. Yeah, it looks fine. Do you think Mateta starts? Yeah. FA Cup final is 20 days. Okay. It's on 17th or 18th May. He starts 35 and 36 for sure. He starts, yeah. 37, I'm not sure, but 35, 36 correct. Captain? Haven't thought about it, but likely Mbuemo, maybe punt on Bowen, or maybe punt on Isak. Yeah. Manon, this is your team. I'm guessing you're also planning probably Saka to Mbumo? Saka to Mbuemo, and I'm also planning a hit. अगर let's say we City का early kickoff, if we get news, ठीक है, but I'm planning कि
I just want to take a little bit of punt. I'm not thinking I want to punt on either. I want to punt on KDB. मुझे थोड़ी सी उसकी feel है, तो I might do, because I don't think Saka starts this week. So Saka to Mbeumo is happening 100%. And if Savinho की news आ गई तो ठीक है. I can also bench him though. But then I'll do Savio to KDB and bench maybe Sar in place of him. I'm unsure about who to start between Burn and the double Nottingham Forest defenders. So, what do you guys think? क्या करना चाहिए? Do you think a hit for KDB and then benching Sar is worth? I would play one Newcastle defender instead of Burn, but honestly, दोनों की clean sheet नहीं लग रही Nottingham मुझे. Forest, you mean? Yeah. Sorry, Forest defender, but I still don't see Newcastle or Forest keeping a clean sheet this week. And Sar, I think he should start, so he's okay to keep. But Savinho is a rubbish pick, and Saka has to go, I feel. And next week is away to Liverpool for Arsenal. How do you see that game going? I just want to completely avoid that fixture. But being very honest, again, जो हमने बात करी, both the teams have nothing to play for. Yeah, Obviously. Yeah. So again, you never know how that match will go. कितनी energy वो use करेंगे again. Champions League होगा Arsenal का, right? उसके बाद वो match है, if I'm not wrong. So again, बहुत used up energy होगी in the second leg. तो मुझे नहीं पता वो match में क्या. That's why I want just Salah. Maybe अगर Haaland is back, I might look to take hits and switch Salah to Haaland for upside. But I don't want too many players from that fixture. Raya as a goalkeeper is fine, but that's it. Manan, why do you want to go for like a De Bruyne over a Bowen? मतलब क्योंकि Bowen is a very good reliable option. I agree. He is. जिसका हमें पता नहीं start करेगा नहीं करेगा. He's not been an option all season, right? So yeah. Probably अगर double होता है तो ज़्यादा temptation है, but उसके अलावा don't you think Bowen is like the logical move to go for someone in your position? Yeah, I mean, I again, as I mentioned, I am looking for a punt, thoda sa. That's where I have a lot of money, so I just felt like, yeah, again, if I have to go for a punt, KDB is a good option, because जब आप wildcard में भी we were discussing punts, तो there was not a single player जो मतलब बहुत सारे players मुझे appeal नहीं कर रहे थे for a punt. So again, that's the only reason. Bowen is a great reliable pick. I feel he's really good, but just from a punt point of view, I like KDB a lot. And any thoughts? Let's say नहीं लाना है, you can just get Mbeumo. You can also do a Mateta to Watkins, by the way, if you have. That's the next week planned move. Palace का fixture is, I know Forest at home and they're on a high, but it's not the greatest attacking fixture जिसमें आप दो attacker लाना चाहोगे, right? It is that, next week Mateta plays Spurs away. No. So next week I'm doing Isak to Watkins or either Marmoush to Watkins. Watkins is coming in. Marmoush plays Southampton. But उस time Haaland पे depend करता है ना. Again, it's again. So, but still, Haaland हो ना हो, Marmoush against Southampton you want to. Marmoush will still play Southampton. Haaland के साथ खेलेगा, Haaland के बिना. Yeah. But then I can say that I am tempted by Chris Wood, man. Next week he has what? Leicester? He plays Leicester. Exactly. Because I know थोड़ा gap है next week और FA Cup final में, but still Palace का, that's the last match before the final. So I'm not sure कि कितनी motivation है या खेलेंगे player है whatever. I'm not sure about these any Palace Spurs will be playing less than 72 hours after their Europa League semi-final. That too an away game. So less than same case with United. They'll be playing less than 72 hours after their game finishes. The Spurs and United are there to target. No, I agree with. My only point is, Bhatia Sahab, I'm not sure how hard Palace will push, to like absolutely crush Spurs, because they don't have to push. Easily they'll score 2 goals. मेहनत ही नहीं करनी. But that's the best part, no? So 36 में there's so many strikers that's so difficult to choose. You can't have them all. I 100% would go for Watkins. I might take a -4, whatever it takes to get Chris Wood. So I don't know. I'll be removing 2 strikers most likely next week. Chris Wood का इसके साथ है उसके बाद match? Leicester.
striker hokey cokey. That's the solution. Again, so that is also Leicester at home, and then they have West Ham away. I just love the fixtures, and then Chelsea Who at do home. Villa play next week? Villa play one second. Bournemouth, I think. Bournemouth Right. away. Bournemouth away. Might get Watkins. Okay. Again, it's tricky. It's tricky. I'll still Again- back Villa to score a couple of goals away at Bournemouth. Yeah. Currently. Bournemouth is a good fixture right now. Yeah. और उसके बाद उनका Tottenham है. And उसके बाद for United. At home. That's इसका a fucking United है insane. away. Yeah. Oh. Last By game of the the way- season, Old Trafford, nothing to play for. But एक चीज क्लियर है कि there is थोड़ा सा I think risk taking का scope है to go against players like Isak, to go against players Yeah. like maybe even Salah, to go against like Palace players जो पड़े हुए लोगों के पास, even Saka, Foden, all these players are not options anymore, right? So बहुत काफी decent scope है risk taking, especially striking position. That's where your wild card comes very handy, right? Because हम लोगों के लिए क्या है ना, I don't know what to pick. That's the thing. that's a good thing to have. Trust me. The obvious options. Yeah. Again, at this point, if you want to chase a little, if you want to pick, let's say, a couple of punts, it's a good time to have wildcard, because if मुझे या भाटिया साहब को करना है, we have to take -4s and -8s on punt, जो might and might not work out. But you have wildcard and you can easily, like, you'll have a proper bench where you can, take a punt. If it doesn't work out, you can have a bench player. इतने pricey options भी नहीं अभी available कि, आपका budget सारा use हो जाएगा. So it's a, again, you're easy top You know 50 how के wildcards work, right? You know how. That's it. 50K में रुक गए. थोड़ा तो और दो है. easy बोला मैंने, easy. हाल अच्छा, आपका easy. उसके आगे टफ होगा. उसके आगे टफ होगा. सर 50K तो ब्रेंटफोर्ड नॉटिंघम फॉरेस्ट के बाद ही हो जाएगा. Oh yes, I forgot you have two players हाँ, left. Yeah. भूल गए हो. Yeah. 40K रैंक गेन होने वाला है. Yeah. चलो, Yeah. anyways, काफी इंटरेस्टिंग है. काफी इंटरेस्टिंग है because it's a shit season, to be honest. Watching wise, Premier League wise, narrative Season wise, is a shit nothing Premier going on. League. FPL Yeah. wise, But FPL wise, except Sorry. for What did I hear? Sorry. जिस सीजन मनन अच्छा करे समझ लो कितना shit season है. it's a shit season. Yeah, it's an anomaly season. Yeah, it's an anomaly season. Asterisk season. Asterisk season. Yeah, but हाँ मतलब काफी swingy potential है. Could like Yeah. yeah. चलो कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरे ऊपर घर के ऊपर. So I think it's time to end. I think you're. Yeah. Okay. That's it. Yeah, Jacob Murphy is drilling into my head right now, so it's time to end the stream. Thank you all for watching. दोस्तों जाने से पहले बस एक आपसे Thank you रिक्वेस्ट है so to much, hit the like guys. button. मेरे और भाटी सबके लिए नहीं करना, एटलीस्ट मनन की रैंक के लिए कर लो. एंड अगर आपको हमको ट्विटर पे फॉलो करने तीनों के, आपको हैंडल्स का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. मनन से पर्सनली आपको सवाल पूछने तो आप कर सकते हैं, हमसे तो कोई पूछोगे आप. और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. Thank you for watching. All the best for Game Week 35 and we'll see you very soon. Cheers guys. Cheers, guys. See you next week.